Great morning, student. Hope so you are fit and fine at your home. Today we going to start our first chapter of 10th class unit 1st session 1 method of communication. Students, you already learn about the communication in 9th class. So we revise here the definition of the communication. Communication is a process which involves sharing of information, opinions, ideas and beliefs between two or more persons through a continuous activity and belief between two or more persons through continuous activity of speaking, listening and understanding. It means communication is a process we can share ideas thought one person to another. There are one sender and one receiver. They can understand your ideas and views. Okay. So communication is not only important in our day-to-day life, but it also play a significant role in one professional career. Okay, because communication is a very important factor in our career. If I speak properly, yeah, if I speak clear content, then other person can understand easily. So people use the different form of the communication such as written and spoken word, body gesture and various other method so that the other person completely understand the message communicates. Because when we start going to start communicate, we use the many methods, body movements, by speaking, words, gesture, posture, many things we involve in the communication. So in this chapter we learn in this chapter we will read about the different method of communication and their function and effectiveness daily life, effective use in our daily life. There are three methods of the communication. The method adopted to the communication any information, opinion, views, thought, etc. mainly depend on the situation. Three basic methods are used in the process of communication. So there is a diagram. There is a three types of communication method: verbal, non-verbal and visual. Verbal communication is the most popular means of the sharing information, ideas. People use word to exchange thought, feelings and idea with other. Sense language is the most important tool of the verbal communication. Mastering and linguistic skill is the essential of for effective verbal communication. So we can say that verbal communication is the most popular mean of sharing information because it's a easy to use and it's a we can share our idea, thoughts, feeling with the help of by speaking. So that is called the verbal communication. There are the two primary mediums to verbal communication. First is the oral and second is written. Then we describe here oral communication. It is the most common medium of the communication. It refers to spoken word being used to convey a message. So it means oral communication. By speaking we can convey the message, that is the oral communication. Effective oral communication is a two-way process and involve both speaking and listening. Because oral communication is a two-way process. There is a one sender and one receiver. Sender send the message and receiver receive the message by listening. Okay, so oral communication can be done either by using mechanical device like telephone, which device we use to the communicate with the other, loudspeaker, tape recorder or face to face interaction. More formal way include the presentation at the business meeting. अगर हमने फॉर्मल वे में करना है तो हम presentation रिप्रेजेंट करते हैं, क्लासरूम में लेक्चर लेते हैं एंड commencement speech given at the graduation ceremony etc. Okay, now next is oral communication is mainly used when one want to inform people or influence them to do something. Spoken means oral communication when we use when you want to inform any
person and peoples, then you say something to in a way. Okay, spoken word bring the personal warmth and friendliness. Friendliness means if you want to talk with your friend, then you use the oral communication and develop a bonding between the sender and receiver. Okay, that type of communication make the bonding means relationship between the sender and receiver. However, effective oral communication require the attentiveness and acceptability. Attentiveness means when oral communication is happening, then listener attentively will listen your information. And acceptability means not here the acceptably means which is sender speaking, then you accept them thing. Acceptably means in a well behaved way you sit and listen on the part of the receiving, as the sometimes the receiver might understand the message differently and the response to the that situation in the different manner. Means when I give the one example in front of you, when teacher give the any information related to the topic and he asked from the student, then which student not attentively listening, then student give the different answer. Many times this type of happening in your class also. It is essential to be precise and effective while the communicating. Means when you listen, when in communication, in oral communication, listening is the more important aspects. Okay, public speaking skill need to be developed. The more effective and practices you put in, the more effective or your speech will become. Okay, public speaking skill need to be developed. Means when you communicate, you need to public speaking leadership quality in yourself. Okay, factor to improve communication skills. To enhance our communication skill, we need to develop some basic traits. Now, speech is the act of delivering a formal oral communication to an intended audience. स्पीच एक ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं टू एन इंटेंडेड ऑडियंस. और इंटेंडेड ऑडियंस मीन्स एग्जैक्ट जो भी हम बोल रहे हैं वो एग्जैक्ट क्लैरिटी के साथ ऑडियंस के पास जाए. ओके, एंड इज नीडेड मोस्ट वाइल द कम्युनिकेटिंग with anyone, or which word we use, that same word go to the audience. For this, one should use the appropriate word, okay, and speak with the clear dictation and pronunciation. This would help to draw the attention of the listener, because if you speak properly and all words should be clear and correct, then the listener can understand your word easily. Okay, now next is vocabulary competency of the effective communication is judged by the correct usage of vocabulary. competency effective communication कैसे जज की जाती है? जब आप vocabulary को अच्छे से यूज करते हो. if one is not sure of how to use the word, one should avoid using it. means अगर आपको नहीं पता है कि वर्ड को कैसे यूज करना है, तो then listener avoid to you. vocabulary can be improved by reading. How can you improve your vocabulary? Vocabulary can be improved by the reading new words daily. Consult a dictionary to learn how to pronounce a new word. means कोई भी एक डायरी या डिक्शनरी आप कंसल्ट कर लीजिए, उसमें उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है कि वो कैसे यूज करना है. ओके, नेक्स्ट इज राइम्स. राइम्स इज अ इंटोनेशन दैट इज primarily a variation in the pitch level of the voice. Rhymes is a intonation. Intonation means आपकी जो वॉल्यूम्स है वो हाई कहाँ पे करनी है, लो कहाँ पे करनी है, दैट इज़ द इंटोनेशन. ओके, मतलब जो आपकी लय सुर लय है, जो उसमें आपका प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए, कहाँ से अप करनी है, कहाँ से डाउन करनी है, विद विच वन स्पीक, और कहाँ पे उसको बोलना है, कितना बोलना है. ओके, वन शुड मेंटेन अ राइम्स टू एक्सप्रेस वन एटीट्यूड एंड द डिफरेंट अरे ऑफ द इमोशन सच एज द सरप्राइज. मीन्स जो कुछ वर्ड होते हैं जिनके लिए हमें अलग से एक्सप्रेशन शो करने होते हैं, सरप्राइज, हैप्पीनेस,
जब आप हैप्पी होते हो, इरिटेशन करते हैं, क्यूरियोसिटी मतलब जानने की कोई भी इच्छा है, बोर्डम मतलब उदासी फील कर रहे हैं, हमें नहीं अच्छा लग रहा है, ये इम्पोर्टेंस ऑफ मकरी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टोन. टोन्स वर्ड ड्राइव देयर पावर फ्रॉम द वे दे आर स्पोकन. मीन्स जो वर्ड्स हैं, हर वर्ड्स की अपनी एक पावर होती है जो हम स्पीकिंग के थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हैं. द टोन ऑफ द स्पीकर हेल्प टू क्रिएट द इम्पैक्ट ऑन द लिसनर. मतलब जैसे भी स्पीकर बोल रहा है उसका इम्पैक्ट लिसनर पे जाता है. इट रिफ्लेक्ट द एटीट्यूड एंड द इमोशन ऑफ द स्पीकर. इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि एटीट्यूड, जो आपका एटीट्यूड है, बोलने का तरीका है, और आपके जो इमोशन है वो लिसनर को या रिसीवर को टच करते हैं. ओके, लिसनर अप्रिशिएट अ चीयरफुल एंड प्लेजेंट टोन. ओके, अगर आपकी चीयरफुल और प्लेजेंट टोन है तो लिसनर उसको अप्रिशिएट करता है, उसे अच्छा लगता है. थस वन शुड ऑलवेज बी पार्टिकुलर एंड यूज एन अप्रोप्रिएट टोन वाइल द स्पीकिंग. ओके, सो इसके लिए क्या है कि हमें अपनी टोन्स को प्रॉपर रखना चाहिए, अप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज पिच. Pitch refers to loudness of the or softness of a speaker voice. मीन्स जो पिच होती है वो कहाँ पे हाई करनी है, कहाँ पे लो करनी है, उसको हम बोलते हैं पिच. पिच मीन्स हमारी वॉल्यूम में कितनी सॉफ्टनेस होनी चाहिए, कितनी हार्डनेस होनी चाहिए, कहाँ पे हमें कितना बोलना है, दैट इज़ कॉल्ड पिच. वन ऑलवेज स्पीक मतलब अगर वन शुड ऑलवेज स्पीक इन अ क्लियर, स्लो एंड कन्वर्सेशनल टोन इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ये भी क्या है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है. हाउएवर वन शुड ओनली स्पीक लाउडर वाइल एड्रेसिंग द लार्ज ग्रुप और लार्ज स्पेस. मतलब उससे ये नहीं है कि आप अगर पूरा ग्राउंड भरा या आपका ग्रुप है तो आप उसमें हमेशा लाउड ही बोलोगे, उसकी नेसेसिटी नहीं है. जब अगर आप स्मूथनेस से, क्लैरिटी से बोल रहे हैं तो आपको इस चीज़ की नीड नहीं पड़ती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ टिप्स टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन. देयर आर सम टिप्स अवेलेबल टू हाउ कैन इम्प्रूव योर ओरल कम्युनिकेशन. फर्स्टली, रीड आउट लाउड. मीन्स जो भी आप पढ़ रहे हो उसको ऊंची आवाज़ में पढ़िए. मेक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और योर रीडिंग. टेक नो मतलब आपकी ऑडियो को वीडियो को आप अपनी वीडियो बनाइए, आपकी ऑडियो को रिकॉर्ड करिए, या तो ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में. टेक अ नोट ऑफ द एरियाज यू नीड टू वर्क ऑन. मीन्स वहाँ पे नोट लगाइए कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ से आपको इम्प्रूव करना है अपने आप को. टॉक टू पीपल इन मैनर दैट शो द इंटरेस्ट. मीन्स व्हेन यू स्पीक विद द मैनर वेल बिहेवियर देन अदर पर्सन शो द इंटरेस्ट ऑन यू. टेक अ पार्ट इन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व द पब्लिक स्पीकिंग. मीन्स जहाँ पे भी ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, स्पीच कॉम्पिटिशन या अदर डिस्क्रिप्शन टॉपिक्स आर हैपनिंग, या देन you should take the participate. Okay, hope so student you understand that today what we read the method of the communication. Firstly we describe here communication, what is the communication. After that we describe there the three method of the communication: verbal, non-verbal or visual. Verbal, you can say if by speaking you give the message, that is the verbal communication, and the sender give the response to you, that is the verbal communication. Non-verbal communication means you can give the written message या other messages. Visual message you can describe your message through the gesture, posture, movement, etc. Thank you. Hope so you understand. After that we read in a detailed view oral communication, which thing we need to oral communication and how can we improve the oral communication. We read only this thing in this video. Thank you. Have a nice day.